Hello students, let us solve section A and section B part of sample paper 7 in this video. Section A, question number 1. What is resonance imaging used to detect cancer? कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक यूज़ की जाती है. व्हाट इज़ दिस? इन शॉर्ट इसको MRI भी कहते हैं. दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स use of number 1 non-ionizing radiations and number 2 strong magnetic field, and with this हम डिटेक्ट कर सकते हैं पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग स्ट्रक्चर. बेसिकली MRI से हमें सॉफ्ट टिश्यू की पिक्चर मिल जाती है और हम जो चेंजेस टिश्यू में आ जाते हैं उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. How many nucleotide bases are present in human genome? Human genome में 3164.7 million nucleotide bases present होते हैं. Question number 3. Why a small part of the activated sludge is pumped back into an aeration tank during secondary treatment of sewage? एयरेशन टैंक में सीवेज के सेकेंडरी ट्रीटमेंट के प्रोसेस में स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पम्प्ड बैक कर दिया जाता है. इस एक्टिवेटेड स्लज में बैक्टीरियल फ्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं जो सर्व करते हैं एज इनोकुलम. सो एज एन इनोकुलम एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इन एयरेशन टैंक ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस. Question 4. How is ongoing sixth extinction different from previous episodes? जब से लाइफ ओरिजिनेट हुई है तब से अभी तक ऑलरेडी 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं एंड सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इज नाउ इन प्रोग्रेस. सिक्स्थ एक्सटिंक्शन सभी प्रीवियस एपिसोड से डिफरेंट है. द करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट इज एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 times faster than the extinction in the pre-human times. Question number 5. Name the enzyme present in E. coli which breaks down lactose to glucose and galactose. The name of enzyme which breaks lactose to glucose and galactose is beta-galactosidase. Question number 6. Mention the role of zona pellucida of ovum. When sperm comes in contact with zona pellucida of ovum, as a result membrane में changes आ जाते हैं which blocks the entry of additional sperm in ovum. Thus zona pellucida ensure करती है कि only one sperm fertilize the ovum. Question 7. State the type of interaction between ticks and dogs. Ticks and dogs के बीच में interaction parasitic है. Ticks are found on body surface of dogs. So basically ticks are ectoparasites on dogs. Question number 8. Name the enzyme used to isolate DNA from bacterial and fungal cells for recombinant DNA technology. बैक्टीरियल सेल्स में से डीएनए आइसोलेट करने के लिए लाइजोजाइम एंजाइम यूज़ किया जाता है एंड फंगल सेल्स में से डीएनए आइसोलेट करने के लिए काइटिनेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी मेयोटिक डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 76 सीड्स इन अ गुआवा फ्रूट? 76 फीमेल गैमेटोफाइट के लिए 76 मेयोटिक डिवीजन चाहिए and 76 pollen grains के लिए 19 meiotic divisions are required. So, total meiotic divisions required for 76 seeds are 76 plus 19 which is equal to 95 meiotic divisions. Question number 10. Predict the effect if the codon UAU coding for an amino acid at 25th position of polypeptide of 50 amino acid is mutated to UAA. अगर
25th पोजीशन पर कोडॉन UAU चेंज हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है इनटू UAA, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा एट 25th पोजीशन बिकॉज UAA स्टॉप कोडॉन है और हमें 50 एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन की बजाय 24 एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन ही मिलेगी. So, if the codon at 25th position is mutated to UAA, a polypeptide of 24 amino acids will be formed as UAA is a stop codon. Question 11. Assertion reason type question. Assertion statement देखिए. The process of oogenesis is markedly different from spermatogenesis. This is the correct statement. Now see the reason. Oogenesis is initiated during embryonic development stage when million gametes mother cells or oogonia are formed in each fetal ovary. यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से डिफरेंट है बिकॉज oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पर ही शुरू हो जाती है. एज अ रिजल्ट फीटल ओवरी में ही oogonia फॉर्म्ड हो जाते हैं. इसके बाद आफ्टर बर्थ नो न्यू oogonia आर एडेड, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. सो हेयर करेक्ट चॉइस इज ए, मार्क ए. Question number 12, assertion statement. Lac operon is a repressible operon. This is wrong statement. Lac operon is an inducible operon because it is turned on in the presence of the inducer lactose. Now see the reason statement. It is switched off in the presence of lactose. This is also wrong. Lac operon is switched on in the presence of lactose. So here both A and R are false. So correct choice is D, mark D. Question 13, assertion statement. Mucous membrane immobilizes the microorganisms in the body. Yes, this is the correct statement. Now see the reason. Microorganisms and dust particles entering the respiratory tract are trapped in the mucus. This is also correct statement and correct explanation for the assertion. Respiratory tract की mucus lining microorganism को and dust particles को trap कर लेती है and microorganisms immobilize हो जाते हैं, उनकी movement रुक जाती है. So correct answer यहाँ पर A है, mark A. Question number 14, assertion statement. Mendelian disorders are transmitted to offspring on the same lines as principles of inheritance. This is the correct statement. Now see the reason. The pattern of inheritance of Mendelian disorders cannot be traced in a family by the pedigree analysis. यह wrong statement है. Mendelian disorders को pedigree analysis की help से family में ट्रेस किया जा सकता है. सो यहाँ पर A is true but R is false. So correct choice is C, mark C. केस बेस्ड क्वेश्चन पर आइए. क्वेश्चन नंबर 15. यहाँ गिवन पैराग्राफ में ट्रांसफर आरएनए के बारे में जानकारी दिया गया है. आपको इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए. द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल. ट्रांसफर आरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं. दिस एडेप्टर मॉलिक्यूल वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन द अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक एमिनो एसिड. दिस वॉज postulated by फ्रांसिस क्रिक. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए है, मार्क ए, फ्रांसिस क्रिक. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. The difference between messenger RNA and transfer RNA is transfer RNA has more elaborated 3-dimensional structure due to extensive base pairing. So here correct answer is C, mark C.
Third part of the question, before the genetic code was postulated, the transfer RNA was called? The transfer RNA was called soluble RNA or sRNA before the genetic code was postulated. So correct answer is C, mark C. Fourth part of the question, transfer RNA binds to messenger RNA through anticodon loop. So correct answer is A, anticodon loop, mark A. Fifth part of the question, following statements are related to given figure of transfer RNA. आपको इन स्टेटमेंट में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. स्टेटमेंट 1 है, इट हैज़ एन एंटीकोडॉन लूप दैट हैज़ बेस कॉम्प्लीमेंटरी टू द कोड. सही स्टेटमेंट है. एंटीकोडॉन लूप होता है ट्रांसफर आरएनए में. सेकेंड स्टेटमेंट, इट हैज़ एन एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड्स टू एमिनो एसिड. यह भी करेक्ट है. एमिनो एसिड के बाइंड करने की भी ट्रांसफर आरएनए में एक साइट होती है. थर्ड स्टेटमेंट, इट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट्स शेप इज लाइक अ क्लोवर लीफ. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड. यह रॉन्ग स्टेटमेंट है. रादर इट इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एमिनो एसिड. सो एग्जैक्ट यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 तीनों सही हैं. सो करेक्ट चॉइस इज सी, मार्क सी. Question 16. This paragraph is based on bioreactors, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाया जाता है एट इंडस्ट्रियल स्केल. सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, ए used medium is drained out from one side. Yes, this is correct. B, biomass produced is high. This is also correct. C, no new medium is added. This is wrong. Used medium is drained out from one side and new medium is added from other side. And also biomass का production भी high होता है in continuous culture system. So here A and B are correct, but C is wrong. So correct answer is D, mark D, both A and B. Second part of the question, stirred tank bioreactors have been designed for the ऑक्सीजन की सप्लाई बायोरिएक्टर में थ्रू आउट बनी रहे, इस तरह बायोरिएक्टर्स को डिजाइन किया जाता है. सो करेक्ट आंसर इज सी, stirred tank bioreactors have been designed for the availability of oxygen throughout the bioreactor. So mark C. Third part of the question, the process of separation and purification of expressed protein before marketing is called as downstream processing. So correct answer है B, mark B. Fourth part of the question, the components of bioreactors are, बायोरिएक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं एजिटेटर सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम. ऑल A, B and C are the components of bioreactors. So correct answer is D, all of above, mark D. Fifth part of the question, डायग्राम देखिए. फर्स्ट डायग्राम है स्टर्ड टाइप बायोरिएक्टर का एंड सेकेंड डायग्राम है शेक फ्लास्क का. विच ऑप्शन करेक्टली टेल्स द एडवांटेज ऑफ वन ओवर द अदर. बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड करते हैं बेटर एयरेशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज. दिस इज द एडवांटेज ऑफ बायोरिएक्टर ओवर शेक फ्लास्क. सो करेक्ट आंसर इज बी, बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स better aeration and mixing properties. So mark B. Start section B. Question number 17. Why some untranslated sequence of bases seen in messenger RNA coding for polypeptide, and where exactly are they present on messenger RNA? Untranslated sequence of bases, or you can say UTR, are required for efficient translation process,
और ये प्रेजेंट होते हैं बिफोर इनिशिएशन कोडॉन at 5 prime end of messenger RNA and after stop codon at 3 prime end of messenger RNA. Question 18. Differentiate between insulin produced by recombinant DNA and pancreas. Difference को टेबल फॉर्म में लिखोगे. फर्स्ट डिफरेंस देखिए, जो इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाया जाता है इट हैज़ A and B polypeptide chain, while insulin produced by pancreas has polypeptides A, B and C and it is called as prohormone. Second difference देखिए, insulin produced by recombinant DNA is directly mature hormone, while insulin formed from pancreas undergoes processing to form mature and functional hormone. Question 19. In a habitat with unlimited resources, which type of growth can be observed? जब resources unlimited हो तो population की growth exponential growth होती है. Second part of the question देखिए, support your answer with graph. ग्राफ बनाइए जैसे शो किया गया है. It is J-shaped graph of population growth when resources are unlimited. Question number 20. What are withdrawal symptoms? जब किसी addicted person की drug को abruptly discontinue कर दिया जाए, then person shows some unpleasant symptoms like anxiety, nausea, excessive sweating, etc. These symptoms are called as withdrawal symptoms. Question 21. What is the basis of naming restriction endonuclease EcoR1? First letter of name is from genus and second letter of name is from species. देखिए, बैक्टीरिया का नाम है एशेरिकिया कोलाई RY13, जहाँ से EcoR1 आइसोलेट किया गया है. एंजाइम EcoR1 में E लिया गया है एशेरिकिया से जो जीनस है एंड CO लिया गया है कोलाई से जो स्पीशीज है एंड R इज फ्रॉम नेम ऑफ स्ट्रेन एंड रोमन न्यूमरल 1 indicates the order in which enzyme is isolated. Question number 22. What are autoimmune disorders? Give an example of it. Sometimes due to genetic reason or ड्यू टू सम अननोन रीज़न हमारी बॉडी अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देती है एंड कॉज डैमेज. दिस डैमेज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस. क्वेश्चन 23. एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स इनिशिएटेड व्हेन अ डोज ऑफ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ह्यूमन बॉडी. जब वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में दी जाती है तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दीज एंटीजेंस एंड दीज एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज द पैथोजन जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है बॉडी में. ऑल्सो वैक्सीन से मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स भी जनरेट होते हैं विच रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली. क्वेश्चन नंबर 24. राइट द इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH or luteinizing hormone on a mature Graafian follicle. LH help करता है in rupturing of Graafian follicle. As a result, secondary oocyte release हो जाता है, thus cause ovulation. So, high concentration of LH is responsible for ovulation. Question 25. Suggest 2 advantages to a farmer using apomictic seeds of hybrid variety. Apomictic seeds को विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बनाया जाता है और जब हम apomictic seeds को हाइब्रिड वैरायटी के लिए बनाते हैं तो फार्मर्स गेट एडवांटेज ऑफ इट. देखिए क्या एडवांटेजेस हैं फार्मर को. नंबर 1, इट लोअर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है. सेकेंड, apomictic seeds do not have to be produced every year.
हर साल हमें एपोमेट्रिक सीड्स को बनाना नहीं पड़ता है. So in this way, apomictic seeds of hybrid variety are advantageous to farmers. That's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.